Hello. So let's continue with our series on CAT 23 VARC solutions. So today let's do one RC. So I picked up first RC from slot one, which is writing ocean words. So let's understand this. For early post-colonial literature, the world of novel was often the nation. Post-colonial novels were usually concerned with national questions. Sometimes the whole story of the novel was taken as an allegory of the nation, whether India or Tanzania. This was important for supporting anti-colonial nationalism, but could also be limiting, land-focused, and inward-looking. So here, what he's talking about is post-colonial literature. So post-colonial means what? So as we know that India also was a colony of Britishers, and likewise many countries, whether in Africa or Asia or other places, they were ruled by some European power. So once those powers left, so let's say in 1947 when Britishers left, so after that we call it post-colonial era. So post-colonial era में जो literature होता था, उसमें कोई भी नॉवल का जो बेस होता था वो नेशन के ऊपर होता था. So post-colonial novels were usually concerned with national questions. वो जो भी they were focused mostly on what was there within the nation. Sometimes the whole story of the novel was taken as an allegory of the nation, whether India or Tanzania. So novel की जो story थी वो allegory क्या होता है? You see, allegory is basically some story or some poem or some picture that uses symbols to convey some hidden meaning. So उसके जो characters हैं, so those characters are not really what they appear in the story or in the picture or in the poem, but they represent something else. So एक बहुत famous book है Animal Farm by George Orwell. उसमें जो characters हैं, animals जो हैं farm पे रहते हैं, तो they represent कैरेक्टर्स. सो ये बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है. तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन दैट रशियन रेवोल्यूशन. तो इस तरह से अब जैसे इंडिया में मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की एक नॉवल है. सो देयर लेट्स से द चाइल्ड व्हिच इज बोर्न एट the stroke of midnight on 15th August 1947 was not really the child but was India. So that child as a character was representing India. तो इस तरह की जो भी एक स्टोरी या पोयम होती है जहाँ पे कोई हिडन पॉलिटिकल या मॉरल कोई मीनिंग होता है उसको एलेगरी बोलते हैं. तो ये जो होल स्टोरी नॉवल थी वो किसी नेशन के बारे में हो सकती थी, इंडिया तंजानिया. दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्टिंग एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. अब एंटी कॉलोनियल फीलिंग है कि चलो अब अंग्रेज जो थे वो इतने सैकड़ों सालों तक रूल करके चले गए, तो ऑब्वियसली द फीलिंग वॉज एंटी कॉलोनियल एंड नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी. बट इट हैड अ डाउन साइड ऑल्सो दैट इट वॉज लैंड फोकस्ड एंड इनवर्ड लुकिंग. सो ये जो नॉवेल्स होते थे इसमें नेशन के ऊपर बात होती थी और नेशन के अंदर जो लैंड है उसी तक सीमित रहती थी एंड इनवर्ड लुकिंग होते थे. सो दिस पर्टिकुलर पैरा टॉक्स अबाउट व्हाट यूजुअली द पोस्ट colonial novels were concerned with. My new book, now whoever has written this, he talks about his new book Writing Ocean Worlds, explores another kind of world of the novel, not the village of the ocean but the Indian ocean world. So अब इसने एक अलग टाइप की वर्ल्ड ऑफ द नॉवल लिखी है, वर्ड बताइए अपने नॉवल में. वो विलेज या नेशन पे फोकस नहीं है, वो इंडियन ओशन के वर्ल्ड पे फोकस्ड है. द बुक डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ नॉवेल्स इन विच द इंडियन ओशन इज एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी. तो इस बुक में कई सारे नॉवेल्स के बारे में जिक्र किया है जो कि इंडियन ओशन के अराउंड सेंटर्ड है. इट फोकसेस ऑन द नॉवेलिस्ट. अब ये बड़े फेमस नॉवेलिस्ट हैं, अमिताभ घोष, अब्दुल रजाक वर्मा, लिंडसे कॉलन, जोसेफ कॉनराड. सो इन लोगों के नॉवेल्स हैं which had Indian Ocean at the center of the story in majority of their novels. तो इसकी जो बुक है ऑथर की इस सेट ऑफ नॉवेल्स को एक्सप्लोर करती है. Their work reveals a world that is outward looking. तो ये वर्ल्ड जो है ये आउटवर्ड लुकिंग है, full of movement, border crossing and south interconnection. They're all very different from colonially inclined Conrad to radically anti-capitalist Colin, but together drawn in shape a wider sense of Indian Ocean space through themes, images, metaphors and language. This has the effect of remapping the world in reader's mind as centered in the interconnected global south. So in this paragraph, what he's saying is कि ये जो इसकी बुक है इसमें इसने कई सारे नॉवल जो रेफर किए हैं और उनके जो नॉवलिस्ट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं. कि उसमें एक तो कलोनियली इंक्लाइंड कॉनराड था, जोसेफ कॉनराड, एक एंटी कैपिटलिस्ट था, एक अमिताभ घोष था. तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने एक ऐसी वर्ल्ड बनाई है जो कि आउटवर्ड लुकिंग है और जिसमें खूब मूवमेंट हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है और साउथ. अब देखो एक टर्म आएगा यहाँ पे ग्लोबल साउथ. सो एज वी नो दैट ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ इज बेसिकली द referred to those countries that are developing, not yet developed.
So if you see the southern part, okay, most of the countries lie in the southern part of the hemisphere. Barring Australia in this part, which is developed, rest are not really developed or they are developing. So most of the countries in Africa, then एशिया में है, चाइना है, इंडिया है, देन लैटिन अमेरिका, ब्राजील, तो ये सब ग्लोबल साउथ कहलाता है. तो इसमें साउथ साउथ इंटरकनेक्शन था. और यहाँ पे बहुत ही वाइडर सेंस ऑफ इंडियन ओशन मिला है थ्रू थीम्स, इमेजेस, मेटाफर्स एंड लैंग्वेज. और इससे एक रीडर के माइंड में रीमैपिंग ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है, बिकॉज रीडर का जो माइंड में वर्ल्ड है दैट इज मोर रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से द अमेरिका और यूके और यूरोप, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो उसके दिमाग में सेंटर्ड अराउंड है, राइट. द वर्ल्ड इज सेंटर्ड अराउंड दोज कंट्रीज, बट यहाँ पे चेंज हो जाता है, रीमैप हो जाता है एज सेंटर्ड इन इंटरकनेक्टेड ग्लोबल साउथ. तो बिफोर वी गो हेड, आई जस्ट शो यू this Indian Ocean and what this, so that we get an idea of what the author is talking about. If you look at this entire thing, this Indian Ocean, right? So where all it connects. So it connects this Indian uh, peninsula to the eastern border of Africa. ये पूरा eastern border of Africa है. It connects with Indonesia and Malaysia and all these countries, the Far East, and it connects with even Australia in the down south. So this whole Indian Ocean world, and even here, this also can be looked at as the Indian Ocean, where the Middle East. So there is a lot of movement. यहाँ पे movement बताया गया है काफी, यहाँ से यहाँ पे. So there was a lot of travel. So this remaps the whole world in the mind of the reader. ये बुक अगर पढ़ेगा तो उसके दिमाग में पूरा ये ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड का जो एक मैपिंग है वो चेंज हो गई है, एंड it is all centered around this Indian Ocean. So that's the effect that this book has on the reader's mind. The Indian Ocean world is a term used to describe the very long lasting connections among the coasts of East Africa, the Arab coast, South and East Asia. तो यही जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, अरब कोस्ट है ये, right? These are all the Arab coast, and then the Far East. So these connections were made possible by the geography of Indian Ocean. तो ये कनेक्शंस पॉसिबल हुए, यहाँ से यहाँ तक काफी लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बन गए. फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री ट्रैवल बाय सी वाज मच इजियर देन बाय लैंड, which meant that port cities very far apart were often more easily connected to each other than to much closer inland cities. Historical and archaeological evidence suggests that what we now call globalization first appeared in Indian Ocean. This is the interconnected oceanic world referenced and produced by novels in my book. तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंडियन ओशन के कारण जो ये जो कंट्रीज थी, ये जो सिटीज थी, इनके बीच में काफी ज्यादा इंटरकनेक्शन बन गए. और ट्रैवल, लेट्स से फ्रॉम हियर, लेट्स से इफ somebody wants to travel from Mumbai to let's say Kenya, this was much easier because sea से मोस्टली ट्रैवल आसान था, बजाय उसको यहाँ से यहाँ इंटरनली कैलकाटा जाने. दिस was more difficult. और अदर सेम थिंग वाज विद इन अफ्रीका. यहाँ कीनिया से उसको यहाँ कहीं जाना है तो इट वाज मोर डिफिकल्ट, बट कीनिया से उसको इंडिया आना तो इट वाज इजियर. सिमिलरली यहाँ से इंडिया की किसी ईस्टर्न पोर्ट से यू कुड गो टू इंडोनेशिया, यू कुड गो टू फ्रॉम वेस्टर्न पोर्ट यू विल गो टू अरब साइड. तो ये सब कनेक्शंस बहुत ज्यादा बन गए थे, एंड दिस बिकेम द फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन. दिस जो ये ऑथर की बुक पढ़ेगा तो उसमें उसने जो नॉवेल्स लिखे हैं, तो उससे जो रीडर है उसको समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन इंडियन ओशन, एंड दिस इज द इंटरकनेक्टेड ओशियनिक वर्ल्ड, राइट. सो लेट्स क्विकली रिकैप टिल हियर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. सो पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स जो हैं वो नेशन के ऊपर फोकस रहते थे पहले, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑथर है, इसकी बुक है, इसमें इसने दूसरे ही काइंड ऑफ वर्ल्ड एक्सप्लोर किए, दैट इज ऑफ इंडियन ओशन. एंड ही टॉक्स दैट ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट नॉवेलिस्ट जिसकी बुक उसने रेफर की है इसमें, and who had centered their novels around Indian Ocean world, and they remapped the world in the mind of the reader, and in terms of interconnected global south, and then because of this connections, the sea connection, the long lasting connects were formed between the different coasts of different countries, because they were much easier to reach than even though within a country some location was very near, but it was very difficult to travel. So even if two cities were distant, but they were connected by sea, so they could form long-lasting connections. And therefore, the author makes a claim that the globalization जो था सबसे पहले इंडियन ओशन में आया. इस तरह से ये बुक में
describe. For their part, Ghosh, Gurna, Colin, and even Conrad reference a different set of histories and geographies than the ones mostly found in fiction in English. Those commonly found are mostly centered in Europe or the US, assume background of Christianity and whiteness, and mention places like Paris and New York. तो ये जो चार राइटर्स हैं, इन्होंने जो बात की है, रेफरेंस दी है, वो डिफरेंट सेट ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है. जनरली फिक्शन में, जनरली जब हम कोई भी स्टोरीज पढ़ते थे, फिक्शन पढ़ते थे इंग्लिश में, तो वो यूरोप और यूएस सेंटर्ड थी. और वहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते थे, दे वर मोस्टली क्रिश्चियन एंड वाइट. सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ मोस्ट ऑफ द फिक्शन इन इंग्लिश, एंड दे मेंशन प्लेसेस लाइक पेरिस एंड न्यूयॉर्क. लेकिन इसके जो बुक है, उसमें जो नॉवेल्स हैं, दे हाईलाइट अ लार्जली इस्लामिक स्पेस, feature characters of color, and centralize the ports of Malindi, Mombasa, Aden, Java, and Bombay. It is a densely imagined, richly sensory image of a southern cosmopolitan culture, which provides for an enlarged space of the world, of place in the sense of place in the world. So here he is contrasting. He generally fiction में mostly white background, Christian background, और Europe, US, New York, Paris focus होता था. लेकिन इनकी बुक में मोस्टली लार्जली इस्लामिक स्पेस है, और उसमें पोर्ट्स ऑफ मलिंदी, मोम्बासा, तो ये सब केन्या में है. ऑल दिस मलिंदी, मोम्बासा आर इन केन्या, देन एडन इज इन यमन, एंड देन ही इज टॉक्ड अबाउट जावा व्हिच इज इंडोनेशिया, एंड बॉम्बे. सो ये सब के बारे में इसमें बात हुई है. यहाँ पे न्यूयॉर्क और पेरिस की बात नहीं, ठीक है. और इट इज अ वेरी रिच सेंसरी इमेज ऑफ अ सदर्न कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. सो इससे वी गेट अ लार्ज सेंस ऑफ प्लेस इन द वर्ल्ड. This remapping is particularly powerful for the representation of Africa. In the fiction, sailors and travelers are not all European. African as well as Indian and Arab characters are traders, nakodas, runaways, villains, missionaries, and activists. तो अब ये जो रीमैपिंग है, ये अफ्रीका को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है. सेलर्स और ट्रैवलर्स हैं, वो यूरोपियन ही नहीं है, वो अफ्रीकन है, इंडियन भी है, ट्रेडर्स भी हैं, नकोडास, कोई शिप थाओ टाइप की कोई शिप होती है, उसके कैप्टन हैं, रनअवेज जो भाग रहे हैं, विलेंस हैं, मिशनरीज हैं, एंड एक्टिविस्ट. तो ये मिशनरीज रिलीजन स्प्रेड करते हैं. तो इस तरह से सारे टाइप के लोग हैं. नाउ दिस डज नॉट मीन दैट इंडियन ओशन अफ्रीका इज रोमांटिसाइज्ड. रोमांटिसाइज्ड मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही आइडियलिक पिक्चर आप बता रहे हो, बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कि एक काम, पीसफुल और बहुत ही लविंग, इमोशनल आप एक कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो अफ्रीका. तो वो बोल रहा है ऐसा नहीं है. This doesn't mean that. See, when you romanticize a place, that means people would want to go there. People would think that that's a ideal place to go to. So romanticize हम किसी चीज करते हैं, so that means uh, we try to, or it sounds as if it's a perfect place where one wants to go to. Right? So आप अगर किसी चीज को रोमांटिक तरीके से देखते हो, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनल और आप बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो रहे हो. राइट? तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है. ये जो इस बुक में ये सब चीजें लिखा हुआ है, इट डजंट मीन दैट कि इंडियन ओशन अफ्रीका इज वेरी रोमांटिसाइज्ड. माइग्रेशन इज ऑफन अ मैटर ऑफ फोर्स. माइग्रेशन जो जबरदस्ती करना पड़ता है, मतलब किसी को अगर माइग्रेशन करना, एक कंट्री से दूसरे जाना है, तो दैट वाज नॉट बाय हिज ओन चॉइस, हिज और हर ओन चॉइस. इट वाज अ मैटर ऑफ फोर्स. ट्रैवल इज पोर्ट्रेड एज अबैंडनमेंट रादर देन एडवेंचर. और लोग अगर एक जगह से दूसरे ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज समबडी इज गोइंग फ्रॉम केन्या टू मुंबई, इट इज नॉट दैट द पर्सन इज गोइंग फॉर एडवेंचर, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के भाग रहा है, अबैंडन करके भाग रहा है. फ्रीडम्स आर केप्ट फ्रॉम वुमेन. वुमेन को फ्रीडम नहीं है. और स्लेवरी इज राइफ मीन प्रेवलेंट, और स्लेवरी बहुत ज्यादा है. तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अफ्रीका डिस्क्राइब किया गया है, तो इससे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ही आइडियल प्लेस है और बहुत अच्छी जगह है. नो, वहाँ पे माइग्रेशन जो है वो जबरदस्ती पड़ता है आदमी को. ट्रैवल भी अबैंडनमेंट का फॉर्म है. फ्रीडम नहीं है वुमेन को, और स्लेवरी काफी ज्यादा थी. What it does mean is that the African part of Indian Ocean world plays an active role in its long, rich history, and therefore in that of the wider. तो ये जो अफ्रीकन पार्ट है, ये बड़ा एक्टिव रोल है इसका, और वाइडर वर्ल्ड में भी बड़ा. So this passage basically talks about how post-colonial literature focused on initially nations, whereas and it was inward looking. Whereas इस जो author की writing ocean worlds है, इसमें कई सारे novels ऐसे हैं जो कि explore कर रहे हैं Indian Ocean की world. And they say that there was a lot of movement, border crossing, south-south interconnection, and that was made possible because of being near the sea. Sea पे होने से distances जो थे वो easily connect हो गए, port city होने से, and this was the interconnected world, and globalization first appeared in the Indian Ocean. And
इसमें जो कैरेक्टर्स, इसमें जो बैकग्राउंड है वो किसी न्यूयॉर्क और पेरिस और ऐसी सिटी का नहीं है, कोई वाइट बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि इस्लामिक स्पेस है और कैरेक्टर्स ऑफ कलर हैं इसमें, और पोर्ट्स ऑफ सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क और पेरिस की जगह पे मालिंदी, मुम्बासा, एडन और ये सब है. And then this is very important for representation of Africa, because Africa is not presented as a romanticized place, but reality is portrayed where migration जो है जबरदस्ती होता है, travel भी आप अगर छोड़ के भाग रहे हो तो freedom नहीं है, right? And Africa has got a big role to play in the wider. So let's now look at the questions. So interesting passage. I would not say it is difficult. I would rate it in reading as a moderate. If you know a little bit of your geography, it would help. So obviously यहाँ पे मैंने आपको ये मैप बना के दिखाया, तो ये मैप तो आपके सामने होगा नहीं. This map can make you visualize the things a little better. So basic geography का idea हमें होना चाहिए. See, I'm trying to drive home that while they claim that आपको आरसी करने के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बट अगर इस तरह का पैसेज है एंड यू नो योर ज्योग्राफी अ लिटिल बिट, सो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू. एंड दैट्स व्हाई a wide variety of reading, diverse reading helps us, because we know about these basic aspects of the world. Basic geography हमें पता होती है, basic history हमें पता होनी चाहिए, right? Basic civics in the sense political systems पता होने चाहिए, economic systems पता होने चाहिए. And this is what we cover in our theme-based RC sessions. All right, so let's move now to the questions. All of the following claims contribute to the remapping discussed in the passage except. तो इसमें रीमैपिंग कहाँ हुआ है? तो रीमैपिंग जो है वो यहाँ पे हुआ है, दिस रीमैपिंग. सो ये यहाँ पे रीमैपिंग हुआ है और यहाँ पे भी रीमैपिंग हुआ है. इफेक्ट ऑफ रीमैपिंग द वर्ल्ड इन द रीडर्स माइंड. सो क्वेश्चन क्या है? ऑल द फॉलोइंग क्लेम्स कंट्रीब्यूट टू द रीमैपिंग. सो रीमैपिंग को सपोर्ट करना है इसमें से तीन क्लेम, एक नहीं करता है. The global south, as opposed to the global north, was the first center of globalization. So obviously this does contribute to the remapping, because it was thought that globalization started from global north, but it turned out that global south was the first center of globalization. ये यहाँ पे दिया हुआ है. Historical and archaeological evidence suggests that what we now call globalization first appeared in the Indian Ocean. So obviously this then remaps, it contributes to the remapping. So this is not the answer. The world of early international trade and commerce was not the sole domain of white Europeans. So world of early international trade जो थी वो केवल white Europeans का ही डोमेन नहीं था, उसमें ये सब जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं ये भी इन्वॉल्व थी. सो दिस ऑल्सो हैज बीन गिवन. ये यहाँ पे दिया हुआ है, right? Different set of histories and geography than the ones mostly found in fiction in English. So mostly centered in Europe or US था. So this book instead highlights a largely Islamic space. तो ये वाले पैराग्राफ से we can say that this is given. So this is also not the answer. Cosmopolitanism originated in the West and traveled to East through globalization. Now this is false. This is not what has been mentioned. Cosmopolitanism जो है वो उनको साउथ में ही दिखाया, ग्लोबल साउथ में. ऐसा नहीं हुआ कि वो वेस्ट से स्टार्ट हुआ और ईस्ट में आ गया. इनफैक्ट वेस्ट और ईस्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ की बात हुई है. So this does not contribute to remapping, so we can keep it. Indian ocean novels have gone beyond the specifics of national concerns to explore rich regional past. Yes, this has contributed to remapping, because जो केवल national concerns ही नहीं है, they have gone beyond that. Now they are exploring rich regional past, and that gives them indications that or contribute to the remapping. Right? हमारे जो दिमाग में एक मैप है वो मैप चेंज हो जाता है. right? तो ये भी नहीं आंसर. Correct answer was 3. So this I would call it easy to moderate. I would not call it difficult or moderate by any standard, because इसमें elimination easily हो गया. Right? You could arrive at this question rather easily by eliminating all the others. Which one of the following statement is not true about migration in the Indian Ocean world? Geographical location rather than geographical proximity determine the choice of destination for migrants. ये बताया हुआ है कि लोकेशन जो थी वो, लोकेशन मीन्स पोर्ट सिटी. अगर समुद्र से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, तो वो उसके लिए माइग्रेंट वहां चले जाता, रादर देन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी. तो जैसा मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर यहाँ पे किसी को माइग्रेट करना है यहाँ से, तो यहाँ जाना उसके लिए कहीं मुश्किल है. लेकिन अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ से माइग्रेट होके वो एक पोर्ट सिटी चले जाएगा, या फिर यहाँ से वो यहाँ चले जाएगा.
but he will not, or he will find it very difficult to go from here to here. So geographical location and not geographical proximity. Right? Proximity means nearness. So nearness doesn't matter here. What matters is geographical location. Right? So this is true and therefore not the answer. The Indian Ocean world's migration networks were shaped by religious and commercial histories of the region. तो माइग्रेशन नेटवर्क्स जो थे वो रिलीजियस और कमर्शियल हिस्ट्री थे, ये भी बताया. इस्लामिक स्पेस है, characters of color and centralize the ports, densely imagined rich density southern cosmopolitan culture will provide for an enlarged sense of place in the world. So ये जो आपको सेंटेंस है यहाँ पे, this tells you that this is also true, that religion और cultural history से जो migration networks थे वो shape, right? So this also is true. So this is not the answer. The Indian Ocean world's migration network connected the global north with global south. No. ये तो साउथ साउथ ही कनेक्ट हुआ था, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ नहीं कनेक्ट हुआ. ये देखिए साउथ साउथ इंटरकनेक्शन, नॉर्थ साउथ इंटरकनेक्शन नहीं. तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मेक्स इट false or not true. So this can be the answer. We keep it. Migration in the Indian Ocean world was an ambivalent experience. So जो migration था ambivalent means it was not very plain or clear cut, right? So it is not as if it was by choice. यहाँ पे जो इसने बताया ना, ये migration तो कर रहे हो आप, लेकिन migration is often a matter of force. Travel is portrayed as abandonment rather than adventure. So ये कोई आपके लिए migration जो है ये एक ambivalent situation थी. It was not really something which you wanted to undertake, right? So it was an ambivalent experience, which means you were trying to, or rather you are traveling, you are moving out not by choice but by force, and it's more of an abandonment कि आप देश छोड़ के भाग रहे हो, अपनी जगह छोड़ के भाग रहे हो. So it was not जैसे यहाँ से आज Indians migrate करते हैं to go to the US, Canada to study and work. That is not by a matter of force, or that is not a matter of force, or that is not abandonment. That is more to do with building your own career or making a life for yourself over there, which you think is better life than what you have here. So that is a matter of choice, not a matter of force. इसलिए ये ambivalent experience है, इसको हम true बोलेंगे, and correct answer is 3. Alright, so इसमें I don't know, इसमें ये दोनों ऑप्शन तो easily एलिमेंट हो जाएंगे, राइट? ये वाला और ये वाला में भी किसी को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि रिलीजियस और कमर्शियल हिस्ट्री कहाँ पे है, और मे बी इसमें भी थोड़ा एम्बिवेलेंट. इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज देन यू माइट बी लिटिल चैलेंज्ड, बट अदरवाइज ओके. सो मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, राइट? मॉडरेट टू मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट, मे बी वी कैन से. सो नॉट एज इजी एज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स लुक एट द थर्ड नंबर. On the basis of nature of relationship between the items in each pair below, choose the odd pair. तो अब odd one out बताना है. वही जो odd one out देते हैं क्या वही कम नहीं है जो इसमें भी एक odd one out दे दिया है. पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी क्या? नहीं, वो तो बॉर्डर के अंदर ही रहते थे पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स. दे वर लैंड फोकस्ड एंड इनवर्ड लुकिंग. बॉर्डर क्रॉसिंग कहाँ होती थी? बॉर्डर क्रॉसिंग तो यहाँ पे हो रही है. कहाँ पे? ये जो ओशन वर्ल्ड्स में हो रही है बॉर्डर क्रॉसिंग. पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में नहीं होती थी. सो दिस इटसेल्फ लुक्स टू बी द ऑड वन आउट. लेट्स लुक एट रेस्ट ऑफ देम. पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. यस, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म था, ये बताया है यहाँ पे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. सो दिस इज सपोर्टेड. दिस इज नॉट द ऑड वन आउट. इंडियन ओशन वर्ल्ड में स्लेवरी थी. यस, स्लेवरी वॉज राइफ, लिखा हुआ ना यहाँ पे. स्लेवरी वॉज राइफ मीन्स स्लेवरी वॉज प्रेवलेंट, बहुत ज्यादा, right? Rife means full of. So slavery was full of slavery. So यहीं से तो सारे slaves Americans पकड़ के ले गए थे फिर blacks को. So this is also not the answer. Indian Ocean novels outward looking. Yes, very clearly. जो post colonial novels तो inward looking थे और Indian Ocean novels outward looking थे, तो ये गलत है. Correct answer 1 है. This question is very easy. A very easy question. I think everybody should have got this correct. All of the following statements, if true, would weaken the passage's claim about the relationship between mainstream English language fiction and Indian Ocean novels, except. तो अब पैसेज में क्लेम किया गया है बिटवीन मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन एंड इंडियन ओशन नॉवेल्स. ठीक है, रिलेशनशिप उसके बीच में क्या थी? तो जैसे हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन में मेन स्ट्रीम में क्या होता था? यूरोप होता था, उसमें अमेरिका होता था, न्यूयॉर्क होता था उसमें,
और पेरिस होता था उसमें, राइट, वाइट क्रिश्चियंस होते थे उसमें, और इंडियन ओशन नॉवेल्स में ये सब नहीं होता था। तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट इट, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन एक्सेप्ट? तो वीकन एक्सेप्ट मीन्स विच वुड नॉट वीकन, राइट। तो तीन इसमें से वीकन कर रहे हैं और एक वीकन नहीं कर रहा है, तो हमें वो पकड़ना है। मोस्ट मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज novels have historically privileged the Christian white male experience of travel and adventure. तो वीकन नहीं कर रहा है मतलब जैसा पैसेज में दिया, तो ये तो पैसेज में ऐसे ही दिया हुआ है ना कि मोस्ट मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज हैड प्रिविलेज द एशियन द क्रिश्चियन वाइट मेल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर, ये तो बताया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए आप, दे अज्यूम अ बैकग्राउंड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड वाइटनेस एंड मेंशन प्लेसेस लाइक पेरिस एंड न्यूयॉर्क, सो दिस इज गिवन, so therefore this is not weakening. So in fact ये आंसर यही मिल सकता है, तो रख लेते हैं इसको। The depiction of Africa in most Indian Ocean novels is driven by an Orientalist imagination of its cultural crudeness. See, जो डिस्क्रिप्शन है, डिपिक्शन है अफ्रीका का, इट इज नॉट डन बाय एन ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन होता है? ओरिएंटलिस्ट इज एन इंग्लिश पर्सन और सम colonial person who has gone back and written about the colonies, or let's say अगर ईस्टर्न इंडिया या ईस्टर्न वर्ल्ड में आए, ओरिएंट मीन ईस्ट, सो लेट्स से सम कॉलोनी सम कंट्री यूज्ड टू रूल द ईस्ट, वहां के लोग जब चले गए ईस्ट छोड़ के, तो फिर वो जो उसके बारे में लिखते हैं उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो ये ओरिएंटलिस्ट थोड़ी है। ये जो डिपिक्शन इन इंडियन ओशन नॉवेल्स है, ये किसने किया है? ये तो इन चार ऑथर्स ने किया है, राइट। अमिताभ घोष, अब्दुल रजाक, लिंसी कोलन, जोसेफ कॉनराड, दे वर नॉट कॉलोनियल, दे वर नॉट ओरिएंटलिस्ट, राइट। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये लोग ओरिएंटलिस्ट थे। हाँ, कॉलोनियली इंक्लाइन था, ये रेडिकली एंटी कैपिटलिस्ट था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लोग ओरिएंटलिस्ट थे। तो इसलिए दिस इज अ definitely this is going to weaken. This is not given in the passage, so this is going to weaken. So this is not the answer. Very few mainstream English language novels have historically been set in American and European. ये बिल्कुल गलत है, very few नहीं, most of them. This is exactly 180-degree opposite, and therefore this definitely weakens. So it's not the answer. The depiction of Africa in most Indian novels, ocean novels, is driven by a post-colonial nostalgia for an idyllic past. तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब है रोमांटिसिज्म, रोमांटिसाइज्ड। तो क्या ये डिपिक्शन ऑफ अफ्रीका रोमांटिसाइज था? नहीं था। यहाँ पे लिखना है ना, इट वाज नॉट रोमांटिसाइज्ड। लास्ट पैराग्राफ में आप अगर देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया, दिस डज नॉट मीन दैट इंडियन ओशन अफ्रीका इज रोमांटिसाइज्ड। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडियन ओशन का जो डिपिक्शन, इंडियन ओशन सॉरी अफ्रीका का जो डिपिक्शन है वो एक रोमांटिसाइज्ड है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एज पर दिस एंड वीकनिंग, सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज रॉन्ग। This question I would rate it as a moderate question, because one is इसमें डबल थोड़ा सा ये नेगेटिव वीकन एक्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो जल्दी करना पड़ता है, तो इट कुड गेट इट रॉन्ग, इट कुड गेट इट रॉन्ग, बट इसमें फर्स्ट इजीली मिल गया हमें। एंड देन ओरिएंटलिस्ट का मतलब हमें पता होना चाहिए। सो जो लोग मेरे साथ में आर्सीज करते हैं, उन्हें ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट और ऑक्सीडेंट और ओरिएंट के बारे में पता है। वी हैव ऑलरेडी डन सम आरसीज, थीम बेस्ड आरसीज बेस्ड ऑन दैट। सो ओरिएंटलिस्ट आपको मतलब पता होना चाहिए था। देन यू कुड हैव गॉट दिस, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कॉलोनियल नॉस्टैल्जिया फॉर एन आइडिलिक पास्ट, तो इसको आपको रोमांटिसाइज से भी इक्वेट करना। तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज और वोकैब का खेल था, इसीलिए इसको थोड़ा मैं मॉडरेट, I'm saying it's moderate, otherwise it was not difficult by any standards. So moderate, these two things can make it a little more challenging, और ये जो question जिस तरह से phrased. So overall, or in all, this passage should definitely have been attempted in CAT slot 2, CAT 23 slot 1, definitely, because इसमें in all likelihood जो थोड़े से people who are good in VRC would have got all the 4 correct, and people who are all right, to a decent level, should have got 3 correct. So this was one passage that must have been done in CAT 2023 slot 1. So that's it for today. Thank you so much. Bye. Before we go, as usual, I would like to highlight CAT VRC coaching, which is going on. New batch started last week. 2 live, highly interactive classes, Mondays, Wednesdays. Recording provided after every class. At least 3 assignments. Okay, at least 3 assignments आपको मिलते हैं। Assignments जो हैं वो Google Forms मिलते हैं, explanatory videos होते हैं, आप attempt करेंगे, answers मेरे पास आएंगे, and then we can keep a regular track of your progress week after week, month after month.
That's a very powerful tool to keep track of your student progress, and I can guarantee that no other institute offers this. There is no, you can't really, okay, you may fix up a counseling session with some faculty and you may go and discuss, but then it's not like uh, picking up the phone and talking to me whenever you want. Best and the most relevant content, pick some best all around and my own, and you will do within this 300, at least 300 high quality RCs and 690 BA questions. Very difficult to find. People look around on the net, try to prepare themselves, uh, prepare, okay, but then they struggle. So don't waste time. We time hai, we have almost 8 months. So don't go around looking for material here or there because you won't find it. Personalized help and mentoring and additional classes for to make you GDPI VAT ready even before that. Because what happens is after calls come out, there are a lot of areas you need to work. So I'll keep giving you pointers time to time. So people who are on a break or people who just finished their graduation, they need to be on top of their academics also, because once the calls come, you don't get time for preparing for your acads, and then you are found wanting. Acads is one area, quants, right? Maths भी पूछते हैं अच्छे colleges के interviews में. So all that I'll help you prepare as you go along. So that's it. Thank you and goodbye.